Okay, so we had covered the introduction to the chapter immunity last time, right? And then within immunity, we decided that, not decided, in fact, we discovered that we have two kinds of immunity. Can you tell me how many kinds of immunity there are? Do you remember, Parisha? This non-specific and specific. Non-specific and specific immunity, and non-specific immunity is present at birth, and specific immunity is the adaptive or the acquired immunity. Non-specific immunity includes the various different kinds of features or functions that have been provided to our body that give us immunity indirectly. And then from the cellular point of view, it only includes the phagocytes, okay, of which we did two kinds of phagocytes last time, which is the neutrophils and the monocytes. ठीक है, and then वो हमने सारा कुछ किया था. In fact, we did this. I'll just go to the textbook. We did all the various stepwise, mechanisms that involves the phagocytosis of bacteria by neutrophils. Then we also discussed a bit about the shapes and the sizes of different kinds of white blood cells. How do we recognize neutrophils? How do we recognize macrophages? When and what is the source of origin of all these white blood cells, which is the bone marrow, from where they are released into the blood. And neutrophils carry out their function within the blood, whereas monocytes, they circulate in the blood, and then finally they reside in the tissues to be called as macrophages. ठीक है, ये सब हमने किया था. And then if I move on to my presentation, then we can now start the discussion of immunity under this flowchart, right? We are done with, अगर हम ये देखें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से नॉन स्पेसिफिक innate immunity हम कर चुके हैं, right? We are doing specific or adaptive or the acquired immunity, which we acquire as we grow and develop since the time of our birth till we reach puberty. Okay? So the immunity which is given through specific or acquired mechanisms is known as the immunity given by lymphocytes. Okay? And then उसके अंदर भी दो categories हैं. The immunity that involves T cells and the immunity that involves B cells. तो T cells से जो immunity मिलती है, that is known as the cell mediated immunity or the cell mediated immune response, whereas the immunity which is given by the B cells is known as the humoral immune response. Humoral, ठीक है? T cells वाली immunity को हम cell mediated कहते हैं, B cells को हम कहते हैं humoral. अच्छा. So this means that in our body we have two kinds of lymphocytes, the B lymphocytes and the T lymphocytes. What is the origin of both these lymphocytes? अगर हम इसको देखें तो कहाँ से originate होते हैं? They originate both of them from the bone marrow. ठीक है, stem cells in the bone marrow, but the organ of maturation is different. किस तरह से हम याद रखेंगे? B cells B से start होते हैं, तो ये origin भी bone marrow में करते हैं and they mature also in the bone marrow. T cells originate bone marrow से ही करते हैं before birth, but they mature in the thymus gland. T for thymus, T for T cells. ठीक है? So the source of origin of the T and the B cells is the bone marrow. The place of maturation of the B cells is the bone marrow, and the place of maturation of the T cells is the thymus gland. कहाँ होता है ये thymus gland? Just in on the upper part of our chest, हमें जो bony अपनी ये जो breast bone या chest bone feel होती है, under that bone, and the name of the bone is sternum, we have this thymus gland. ठीक है? This thymus gland is large before puberty. तो इस thymus gland के अंदर हमारे T cells mature होते रहते हैं till finally when we reach puberty, the thymus shrinks completely, which shows that the process of maturation of the T cells has been completed. Once they are matured, then they will migrate to the tissue fluid, the lymph nodes, and the spleen. ठीक है? T cells, place of origin, place of birth, bone marrow. Place of maturation, thymus.
And once they are matured in the thymus, they will leave the thymus at puberty to enter blood, tissue fluid, lymph nodes and spleen. ठीक है? बी सेल्स आपके बोन मैरो में ही मेच्योर हो ग्रो होते हैं, मतलब ओरिजिनेट करते हैं, एंड दे मेच्योर इन द बोन मैरो, एंड फ्रॉम देयर दे विल स्प्रेड इनटू द ब्लड, lymph, and they can also concentrate in the lymph nodes and the spleen. ठीक है? ये बात समझ आ रही है परिचय? If there's no problem, then I'll move ahead. Yes, miss, I can understand. अच्छा, whenever you have a question or whenever you feel कि क्योंकि मैं अपनी डेटा पे क्लास ले रही हूँ, तो that you can't hear me or my voice is breaking, just message me on WhatsApp. ठीक है? Okay. Fine. अच्छा, एक और चीज भी मुझे बतानी है कि इफ यू वांट टू जस्ट रिमेंबर इन वन वर्ड, जैसे अगर मैं बी सेल का नाम लूं तो आपके दिमाग में फौरन से क्या पिक्चर आनी चाहिए, और टी सेल का नाम लूं तो क्या पिक्चर आनी चाहिए? बी सेल्स मेक एंटीबॉडीज and T cells have a role in these three phenomena. T cells can kill cancer cells directly. T cells can kill virus infected cells. ठीक है, मैं वायरस भी रेड से लिख लेती हूँ. Virus infected cells. And T cells can also destroy the transplanted cells. यानी कि अगर हमारी बॉडी में cancer cells are गए, so these T cells will help destroy the cancer cells. They can also destroy the transplanted cells because they consider them as foreign cells or non-self cells, and they can also destroy the virus infected cells. यानी कोविड के जमाने में whoever suffered from COVID-19 and of course survived the attack of COVID-19 and has developed immunity, maybe because of the infection or because of the vaccination, it's actually the T cells which are responsible for that, right? So B cells make antibodies, and T cells, they are responsible for killing virus infected cells, cancer cells and transplanted cells. अच्छा, अब हम करते हैं सबसे पहले B cells की बात, right? So let's go to the textbook, and before even we delve into the depth of the B and the T cells, एक सबसे amazing बात which is so difficult to understand even for the biologists of today, and that is that when we are not even born, okay, before birth, when the T and the B cells, they are originating in the bone marrow, तो उस दौरान और उसके बाद भी after birth also, there are some processes that are happening inside the T and the B cells which are responsible for the immunity that we get throughout our whole life. और वो क्या है? Let's read that part of your textbook, and to me that's the most amazing part of this immune function. ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है? Only mature lymphocytes can carry out an immune response. During the maturation process, यानी कि बी सेल बोन मैरो में मेच्योर हो रहा है और टी सेल जो है वो थाइमस में मेच्योर हो रहा है. So during the maturation process, many different types of B and T lymphocytes develop, perhaps many. Each type is specialized to respond to one antigen, giving the immune system as a whole the ability to respond to almost any type of pathogen that enters the body. When mature, all these B and T cells circulate between the blood and the lymph. This ensures that they are distributed throughout the body so that they come into contact with any pathogens and with each other. क्या मतलब है इस बात का? Now just try to understand this thing. And this is a very important concept. This is at birth, right? At birth, let's say that this is our bone. कोई सी भी bone उठा लें, कुछ खास bones में ये mature होते हैं. We have bone marrow inside the bone, ठीक है? So when we are born with the T cells and with the B cells, ठीक है? After birth, they undergo maturation, ठीक है? तो बी सेल्स की मेच्योरेशन कहाँ हो रही है? यू टेल मी परीक्षे, वेयर डू बी सेल्स मेच्योर? The bone marrow. द बोन मैरो. ये हो गई बोन मैरो में. एंड द टी सेल्स आर मेच्योरिंग इन द थाइमस ग्लैंड. अच्छा, व्हेन दे आर मेच्योरिंग,
मिलियंस, ठीक है, एक दो नंबर नहीं, मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ बी सेल्स डेवलप, और हर जो वेराइटी है ना वो यूनिक है, राइट, और मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ टी सेल्स आल्सो डेवलप। तो फॉर एग्जांपल अगर मिलियंस तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकती, इफ आई एम ड्रॉइंग बी सेल्स, तो सपोज कि मैं आपको चार बना के दिखाती हूँ, ठीक है, एंड ऑल फोर ऑफ दीज आर टेक्निकली बी सेल्स बट दे आर ऑफ अ डिफरेंट वेराइटी, एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ देयर वेराइटी। एक को मैं ऐसे बना देती हूँ, एक को ऐसे, one is like this and the other is like this. How have I made them different, Parisha? As the antigen, the cell markers are different. Cell markers are different, ठीक है, basically हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, cell markers different है, और you can even say the receptors are different, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने चार बनाए हैं, they are all B, but in reality they are millions of varieties, ठीक। ये मेच्योर हो रहे हैं आपके बोन मैरो में, इसी तरह से टी सेल्स भी हो रहे हैं, टी सेल, और मैं चार बना रही हूँ लेकिन इन रियलिटी देयर आर मिलियंस, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स के शेप्स हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन यू आर still a child, you, even if I say that the maturation process is completed and you have matured or you have attained puberty at 12 years or 14 years, ठीक है, तो by 12 to 14 years your body is capable of responding to every antigen which you hadn't been exposed up till now. For example, हम जब पैदा हुए होंगे और जब हमने puberty attain की होगी, तो उस वक्त तो we, our immune cells, our T and the B cells did not know that once in a time in the year 2020 there will be a pandemic with the virus known as COVID-19, but our T cells and B cells were completely ready to combat that, and they did it, right? Many people recovered, many people have shown a positive response for vaccines. So why? Because different varieties of T and the B cells were developed pehle se hi, so that they can respond to an antigen in the future anytime in their life. So this is the most amazing job of the T and the B cells. Are you understanding this mechanism? Yes, miss. ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त है, एंड आई थिंक इवन टुडे इन दिस मॉडर्न एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2023 हो रहा है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन। कोई कहता है म्यूटेशन होती है, कोई कहता है जीन्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स हो रही है, बट दिस इज अ वेरी वेरी ओवर सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब दोबारा से चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। हम्म लेट्स लुक एट द बी सेल मेच्योरेशन फर्स्ट, ठीक है। और बी सेल्स के मेच्योरेशन के लिए वी विल हैव टू लुक एट दिस डायग्राम। whenever we do कोई भी हम काइंड ऑफ इम्यूनिटी करते हैं ना, स्पेशली स्पेसिफिक वाली इम्यूनिटी, तो या तो वो टी सेल की बात करेंगे या बी सेल की करेंगे। तो चाहे टी की करें या बी की करें, बी सेल में पहले हम करेंगे कि वो मेच्योर कैसे हुए, एंड देन वील डू एक्टिवेशन। सो लेट्स फर्स्ट डू मेच्योरेशन। ये जो हम हेडिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग मेच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स। अच्छा, now I'll be asking you questions, Parisha, and you respond to whatever I ask. Okay. Here you can see step by step चलते हैं। ये bone marrow में आपका एक immature B cell है। It is dividing by mitosis, which means कि mitosis is a nuclear division in which one cell makes an identical replica, genetically identical daughter cells. तो ये इसकी daughter cells हो गई, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। तो in exams they will ask you कि इस स्टेज और इस स्टेज के बीच में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे माइटोसिस। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, यू विल से माइटोसिस। लेट्स सी आगे क्या हो रहा है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है कि बिटवीन दिस स्टेज एंड दिस स्टेज यू विल से मेच्योरेशन हो रही है। सो दिस इज डिफरेंट, मेच्योरेशन इज हैपनिंग, और हमें नजर आ रहा है कि पहले इन बी सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ भी नहीं था, एंड नाउ वी कैन सी सम स्ट्रक्चर्स आर बीइंग मेड, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर द बी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है।
पहले ऐसे हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में डेवलप हो रहे हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो हमें उसके सरफेस पे नजर आ रहे हैं. वी कैन सी द रिसेप्टर्स which are found on the surface of the B cells, and we can also see that the shape of these receptors, ये जो receptors हैं इनका shape जो है वो बहुत मिलता है किससे, उन एंटीबॉडीज से मिलता है जो कि इवेंचुअली इन बी सेल्स को आगे जाके बनानी है. So this means that the main change that happens as far as the maturation of the B cells is concerned is the development of the B cell receptors on the cell surface membrane. Over here, only 4 varieties or 4 types of B cells have been shown to you, each with a different shape of the receptor. हकीकत में millions हैं, ठीक है? Every B cell having a different receptor means that every B cell is ready to handle or to respond to a different kind of antigen. ठीक है? ऐसे नहीं होगा कि अगर एक एंटीजन अंदर कोविड-19 आ रहा है फॉर इंस्टेंस, तो कोविड-19 का शेप जो है वो इससे सिमिलर है, तो वो सिर्फ इस वाले बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, इसको इसको और इसको नहीं करेगा, राइट? Another thing, mature B cells, once they are mature in the bone marrow, they will be released into the circulation. Blood में इधर उधर घूमेंगे B cells, and they will concentrate in the liver and the spleen. ठीक है? Any questions? Miss, how does the shape of the receptor change? Does it change This is up? what is not understood. अच्छा, how does the shape change? कैसे? From this to this? Yes. हाँ, this is actually only इसको ना सिर्फ ये कह के आपको समझा दिया जाता है कि बस मेच्योरेशन हो रही है. कैसे हो रही है? Nobody explains us. At least not for this level. It's a very, very complicated thing, to understand. Basically, you'll have to go into the genetic details of it, and it's beyond the scope of your syllabus. Okay. ठीक है? अच्छा. What is expected from you exams में आपसे क्या expected है कि आपको ये stages दी जा रही हैं, आपको बताना है इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है. Mitosis, maturation, and then of course this is like different varieties, mature cells each with different B cell receptors, right? अच्छा. ठीक. Let's go back. Now let's move to clonal selection and clonal expansion. अब हम इसकी दूसरा वो करते हैं. हमने पीछे क्या कर लिया? What we have covered up till now is B cell maturation. Now we'll do B cell clonal selection and B cell clonal expansion. तो दो तरह के diagrams आ सकते हैं exam में. कैसे? One can be this diagram, which we've just done now. ठीक है? अब जो second diagram आएगा वो इस तरह का आ सकता है. This one. And let's dig deep into this. अच्छा, पीछे आपको क्या बताया गया था कि in our bone marrow millions of varieties of B cells can develop, right? And out of those millions of varieties, only that particular B cell will be selected which is needed, which is complementary to the antigen to which your body has been exposed. So let's say कि your body was exposed to this purple colored antigen जो आपको इस picture में नजर आ रहा है, or somehow the shape of that antigen was very similar to or complementary to the shape of the receptor of this kind of B cell. So this means only this B cell will be selected and this B cell will be stimulated to make millions and millions of copies of it. ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है इसमें, and let's read it step wise. ठीक है? Step 1. आप खुद से पढ़ो ये step 1. Just read it out loud. Only one of these B cells has a B cell receptor that is specific to the shape of the antigen that has entered the body. Understood? Yes, miss. ठीक है, देखते हैं स्टेप 2 में क्या हो रहा है. लेट्स से कि दिस हैज बीन सिलेक्टेड. ठीक है, वाई वाला बी सेल सिलेक्ट हुआ. व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 2? रीड इट. The selected B cell divides by mitosis. Some of the daughter cells develop into plasma cells and other into memory cells.
द सेलेक्टेड बी सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, जो भी हमने सेलेक्ट की है वो माइटोसिस से डिवाइड हो जाएगी। ये माइटोसिस ही हो रहा है ना, हमने इस बी सेल को सेलेक्ट किया, ये डिवाइड हुई माइटोसिस से। माइटोसिस मींस उसी तरह की दो बन गए, राइट। अच्छा, when it divides by mitosis, what happens is that some selected B cells will develop into plasma cells and some selected B cells will develop into memory cells. तो ये वाले जो B cells हैं, they are selected and they are developing into plasma cells, और ये वाले जो B cells हैं वो memory cells में develop हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि at this stage, ये वाली जो stage थी ना जिसमें हमने selection की थी, तो it was a clonal selection, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही सेल दिखाया है ना, in reality there is a clone of cells, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो दिस क्लोन ऑफ सेल्स इज सेलेक्टेड। अच्छा, अभी सेलेक्ट हो गई, अब हमें इस क्लोन को एक्सपैंड करना है, तो हमने एक्सपैंड कर लिया। कैसे? हमने इसको, ये पहली जो स्टेज एक्सपेंशन की थी वो क्या थी कि हमने ये किया है, ये किया है, इसको एक्सपैंड किया इनटू मेमोरी सेल्स, इसको एक्सपैंड किया इनटू प्लाज्मा सेल्स। सो क्लोनल सिलेक्शन and clonal expansion. अच्छा, in order to understand the actual definition of clonal selection and clonal expansion, तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है। आप दोनों को जरा जस्ट रीड both these definitions out loud, please. Individual lymphocytes have cell surface receptors specific to one antigen. This specificity is determined as lymphocytes mature and before any antigen enter the body during an immune response to only lymphocyte response are those with receptors specific to antigens on the surface of the invading pathogen. ये पढ़ तो लिया, लेकिन did you understand it? Can you explain this to me in your own simple words? Every lymphocyte What do you mean by clonal selection? हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। Every individual lymphocyte has a receptor that is specific to one antigen. Okay, very good. And that specific B cell is selected for when that particular antigen enters the body. Yes. What about clonal expansion? इसका क्या मतलब है? Just explain it to me in your own words. Clonal selection तो हो गई, अब clonal expansion में क्या हो रहा है? The number of specific clones increases by mitosis. Exactly, during an immune response. And the same thing is happening over here. Acha, some of the clones are going to form plasma cells, some of the clones are going to form memory cells. अच्छा, अब देखते हैं फर्क क्या है इनमें। ये जो आपके प्लाज्मा सेल्स है ना, दे आर वेरी डिफरेंट, काफी डिफरेंट है शेप में, ठीक है। व्हाट डू दे डू? दे सीक्रीट एंटीबॉडीज। कभी भी आपको कोई पिक्चर में ऐसी वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आए इस तरह से, सो दिस मींस दैट दोज आर एंटीबॉडीज। ऐसे, ये ऐसे भी बनी हुई होती हैं, ऐसे भी बनी होती है, राइट। सो these are all antibodies, so you will say plasma cells secrete antibody. अच्छा, incorrect words which the students use, they say plasma cells make antibodies, plasma cells create antibodies. Simple आप कहोगे plasma cells secrete antibodies। कौन सी एंटीबॉडी? विद दैट एंटीजन जो कि एंटर हुआ है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब ये देखो, इसको गौर से देखो, ये जो आपके प्लाज्मा सेल्स थे ना वो इस बी सेल से बने थे ना, तो अगर हम इस बी सेल के रिसेप्टर को गौर से देखें तो इसका जो रिसेप्टर का शेप है ना, ये इससे सेम लग रहा है एंटीबॉडी के शेप से। Yes, miss. So this means that the shape of the antibodies is very similar to the shape of the B cell receptor. वो जिस तरह के उसके रिसेप्टर का शेप है वैसे ही शेप की वो एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट। एंड प्लाज्मा सेल्स विल सीक्रेट एंटीबॉडीज एंड देन दीज एंटीबॉडीज आर रेडी टू अटैक एनी एंटीजन। जो एंटीजन अंदर आया था वो एक तो नहीं आएगा, बहुत सारे होंगे, वो उसको अटैक करेगा और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपको इम्यूनिटी देंगी, राइट। बट एट द सेम टाइम जब प्लाज्मा सेल्स कुछ बने थे तो साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बने थे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मेमोरी सेल्स? दे आर द मेमोरी ऑफ योर इम्यूनिटी। दे आर गोइंग टू स्टे देयर इन योर ब्लड, ठीक है।
सेकेंड टाइम आपको अटैक हुआ है, लेट्स से कि ये मीजल्स वायरस है, you had an attack of measles when you were very young, and now at the age of 19, 18, 20 you have another exposure to the measles virus. आपको पता भी नहीं चलेगा, your virus will enter the cell, your memory cells will very quickly recognize this कि अरे तो वही वायरस है जो पहले आया था. The memory cells are going to quickly recognize it, and very very quickly what will the memory cells do? They will directly mature into the plasma cells. ये नजर आ रहा है ना, memory cells ने antigen को देख लिया, प्लाज्मा सेल्स में फटाफट मेच्योर हो गए मेमोरी सेल्स और बहुत सारी एंटीबॉडी बना ली. अच्छा, अब आपको एक चीज इसमें गौर से देखनी है कि when first time the plasma cells were secreting antibodies, the number of the antibodies that were secreted by the original plasma cells, जब पहली दफा एंटीजन आया था, वो नंबर स्मॉल है, थोड़ी सी है, ठीक है. Whereas when the second time the antigen enters your body, since the memory cells are already developed, सिंस जो है ये सारे स्टेप्स अभी नहीं करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप्स आपके एस्केप हो गए, ये भी नहीं करना पड़ा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपके पास डायरेक्टली मेमोरी सेल्स है, तो क्या होगा, फटाफट दोज मेमोरी सेल्स विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन, will develop into plasma cells, and plasma cells will now make antibodies in a larger number as compared to the initial response. Are you understanding this? Yes, miss. यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. The antigen enters the body for a second time. Memory cells produced during stage 2 respond and divide to form more plasma cells. अब इसमें दो तीन बातें हैं, and then I'm going to sort of make a star. Number one, more plasma cells. अगर more plasma cells होंगी तो more antibodies होंगी, ठीक. अच्छा, ये response faster भी है, right? Than in stages 1 to 3 because more memory cells bhi hain. So the examiner is going to ask you a question. Why is the secondary immune response better than the primary immune response? ये आपका जो है ना, ये secondary immune response है, तो आप कहोगे the secondary immune response is faster than the primary immune response. Why? Number one, the memory cells are more. Number two, the plasma cells are more. Number three, the antibodies are more. Number four, the response is faster. ठीक है, ये चार चीजें आपको बतानी है. Let me show you a slide from my PowerPoint. Hmm. I'm holding on to this slide. Let the recording go on. I think there are 4 minutes for the 40 minutes session to finish, and then after the session is finished, I'll restart the meeting. But still, we have 4 minutes in this time. We'll use this time to read this, and I want you to read it properly. Take your time. So I've read it. Any questions? Oh, miss. No? अच्छी तरह से समझ आ गया? अच्छा, okay. Now I'll end the recording and then I'll restart it again. तो आपके पास मैसेज आएगा कि स्टॉप द रिकॉर्डिंग या कन्वर्ट द रिकॉर्डिंग. तो अभी फिलहाल आप स्टॉप कर लो, स्टॉप कन्वर्टिंग करो,